हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है बिकॉज टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट जॉब्स, पार्ट टाइम जॉब्स इन द यूके। तो ये कुछ ऐसी पार्ट टाइम जॉब्स होने वाली हैं जो आपको चांसेस 50-50 हैं कि मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। बट ये जॉब्स काफ़ी ज़्यादा ईजी हैं, मतलब कि इफ़ यू कंपेयर देम टू वर्किंग इन कंस्ट्रक्शन और इन वेयर हाउसेज, तो उनके कंपैरिजन में काफ़ी ईजी जॉब्स हैं। और अगर हम बात करते हैं अबाउट आवरली पे, तो आवरली पे इज ऑल्सो लाइक गुड एंड जस्टिफाइड एज वेल। सो लेट्स जस्ट गेट स्ट्रेट इनटू दिस वीडियो। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको एक जॉब के लिए अप्लाई करना है तो ऑब्वियसली आपको एक सीवी चाहिए। तो अगर आपको सीवी के रिलेटेड एक अलग से वीडियो चाहिए, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, सो आई कैन मेक अनदर वीडियो ऑन इट। अगर आपको चाहिए तो येस रिप्लाई कर देना एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। एंड फॉर दोज हु वांट टू कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, my handle is in the description, so do let me know. Just follow me and I'll follow you back and you can talk about whatever you want to. So let's just get straight into this video. तो सबसे पहले हम कुछ ऐसी जॉब्स के बारे में बात करेंगे जो कि जिनमें से कुछ मैंने खुद की हैं और जिनमें से कुछ मैंने करी नहीं है बट मुझे आइडिया है बिकॉज मेरे फ्रेंड्स ने करी हैं। सो फर्स्टली टेस्को में बात करते हैं। तो टेस्को यहाँ पे जो लोग यूके में हैं, दे ऑब्वियसली दे नो अबाउट इट, बट दोज हु आर इन इंडिया, टेस्को इज़ अ सुपर स्टोर या फिर सुपर मार्केट, एक इस तरह से हम कह सकते हैं। मार्केट नहीं है, मतलब सुपर स्टोर है इन विच यू कैन बाय योर ग्रोसरीज एंड एवरीथिंग। तो टेस्को के अंदर अवेलेबल रहती हैं। तो टेस्को के अंदर जो आवरली पे है, इट इज़ अराउंड 11 पाउंड्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो ओके। फ्लेक्सिबिलिटी रेफर्स टू if you are working like long hours, or if you are working like short hours, or if you can make time on weekends, or you can't make time on weekends and you just prefer to go for weekdays, and that too sometimes you just go for like 3 to 4 days or even like lesser than that, or just 1 to 2 days is your flexibility. Like you can't work more than 20 hours because you have restriction, right? So obviously you can't work more than 20 hours, so you'll have to go for either 2 long days or one long day and one short day, depending on how many hours you can work for. So yeah, that is what flexibility means. So iski flexibility is okay-ish, like in during holidays, like why I mentioned कि आप 2 long holidays कर सकते हो। Obviously like one long day is around 12 hours, so you are going to complete like 24 hours, which is more than 20 hours. तो obviously वो आप ड्यूरिंग हॉलीडेज़ अपना अनरिस्ट्रिक्टेड आवर्स काम कर सकते हो। आई थिंक अप टू 48-50 आवर्स आप काम कर सकते हो। तो उस टाइम पे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इज़ ओके। तो टेस्को में लाइक ड्रामा अगर हम बात करें, लाइक व्हाट चैलेंजेस डू यू फेस वाइल डूइंग टेस्कोज जॉब, लाइक इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे ड्रामे तो नहीं होते, मतलब ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं देखने को मिलता। बट इसकी मतलब ऐसा अगर मैं फाइनल रेटिंग करूँगा तो आउट ऑफ 10 आई वुड रेट इट a 7, a solid 7. So all right, let's go to the next job. तो नेक्स्ट जॉब जो है वो है वेटर की। तो वेटर की जॉब, यहाँ पे कोई काम बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। सो इफ़ यू वांट टू वर्क, जस्ट गो फॉर द जॉब। लाइक इफ़ यू आर गेटिंग इट, जस्ट गो फॉर इट। तो आपकी जो आवरली पे होती है, इट इज़ अराउंड लाइक 9.5 pounds, लाइक 9.5 pounds to 10 pounds per hour, डिपेंडिंग ऑन वट योर लोकेशन इज़ ऑब्वियसली। एंड इसमें जो बेनिफिट है, जैसे टेस्को हो गया, ऊबर ईट्स, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में जॉब करते हो, इनमें आपको टिप्स नहीं मिलती। बट इफ़ यू वर्क एज अ वेटर, ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द कस्टमर दैट हाउ मच दे आर गोना पे यू एक्स्ट्रा, यू नो, एज अ टिप। तो इसमें टिप्स भी मिलती हैं। तो हो सकता है आपको 1-2 पाउंड की टिप मिल जाए, हो सकता है आपको 10-15 या फिर 1000 पाउंड की टिप भी कई बार दे देते हैं। लाइक इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द कस्टमर, लाइक how flexible they are with their money, you know, and how much they can pay you as a tip is all that matters. So इसमें long hours की flexibility रहती है। So long hours, as I just mentioned earlier, that it is around, like it depends on the job that you are doing. Like if you are working as a healthcare assistant here, your long day is gonna count for 12.5 hours or 13 hours. So it totally depends. Like in some places it is 12 hours. So if I talk about like long hours, I consider it as 12 hours because it's easier. Like short day को मैं 8 hours मानता हूँ। तो इस तरह से if you are doing a long day and a short day, it equals to 12 plus 8, 20 hours. तो that comes under your like that restricted hours, right? So उसमें आता है। उसके बाद वेटर के अंदर जो रिएक्शन रहता है, समटाइम्स
a person who is drunk, or like some, like not even drunk but some of the customers, like always ऐसा होता है कि you assume this कि Britishers are really nice, like yeah they are nice, but sometimes like there are exceptions as well. तो आपके साथ कुछ angry customers भी आ सकते हैं, so you gotta be careful in that way. So I would rate this job as like 6, a solid 6 on 10, yeah. उसके बाद हम बात करते हैं, टेस्को की हो गई, वेटर की हो गई, उसके बाद ऊबर ईट्स. नाउ ऊबर ईट्स के लिए आपको एक व्हीकल चाहिए. इफ़ यू हैव अ कार यू कैन गो फॉर दिस जॉब, और इफ़ यू हैव अ बाइक यू कैन गो फॉर दिस जॉब. सबसे बड़ा चैलेंज इसमें ये रहता है ऊबर ईट्स में, यहाँ का वेदर. तो आपको पता है कि यूके में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो ये एक तरह का हेल हो जाता है उन लोगों के लिए जो आउटडोर काम करते हैं. सो आवरली पे जो होती है, इट वेरीज, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी ऑर्डर्स यू आर गेटिंग एंड how much you are making per hour. So that is how they pay you. And flexibility is में maximum freedom होती है, like you can work as many hours as you want, but obviously if you are on a student visa you have those restricted hours, but during holidays you can work as much as you want, so they won't stop you from making money. उसके बाद जो अगली जॉब है Uber Eats, I would rate it like a solid 8 on 10, because you're on your own, you have your own, like you are free from someone's like supervision, you're not working under supervision. So obviously it's not a restricted place, you know, it's not a job that you can call a kind of prison, you know what I mean. So यूनी लाइब्रेरी, सो यूनी लाइब्रेरी के अंदर आप काम कर सकते हो. ये काफ़ी डिफरेंट सा है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो. ऑब्वियसली स्टार्टिंग में रिजेक्शंस मिलेंगी, बट वंस यू स्टार्ट गियरिंग अप, वंस यू स्टार्ट लेवलिंग अप, यू नो, so once you start grinding, obviously there are going to be pathways that are gonna open for you, you know. So uni library के अंदर like आपको जो स्टार्टिंग पे होती है, इट इज़ अराउंड लाइक नॉर्मल 10.5 to 11 pounds per hour. So काफ़ी इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इट स्टिल लाइक you can work every day if you want, but obviously it depends on what visa you are. So इसका जो प्रॉब्लम रहती है वो यही रहती है यूनी लाइब्रेरी की जॉब की, कि इट इज़ रियली बोरिंग, बहुत ज़्यादा बोरिंग है, बट ईजी बहुत है. तो वो जो आवर्स होते हैं, इफ़ यू आर वर्किंग फॉर लाइक अ नाइट शिफ्ट फॉर एग्जाम्पल, you are making money obviously, but if you talk about those long hours, you know, so you just gotta sit there idle, like doing nothing. So that is what the problem is in this job. But uni library की भी सही है, easy है but boring है, but it works. So it is a solid 9 on 10 according to me. So these were the jobs that I was gonna talk about. So now let's talk about like some other jobs as well. So you can work as a kitchen porter. तो kitchen porter basically वो होते हैं जो dishes clean करते हैं, everything, you know, like बर्तन धोना ये सब करना. So kitchen porter का यही काम होता है, to maintain the cleanliness of the kitchen, you know what I mean. So that is what it is. So you can apply for either a kitchen porter, or you can apply for deliveries as well, or if you want to work in warehouses, because obviously they give you like flexible shifts, so you can go for warehouse jobs as well. Because if you go for warehouse jobs, you get paid like minimum wage around like 12 pounds, like 11-12 pounds, which is again a good thing. But if you're going for something like warehouse jobs, like there are different like titles, like job titles in warehouse jobs as well, like अलग अलग आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी. So you can go for a job for like a warehouse assistant, obviously if you are just starting off, you know. तो उसमें बस आपको स्कैन करने होता है QR codes like boxes के, you just gotta pack those, like tape करना होता है, ये सब करना होता है. Like starting में you feel it's really difficult, but after some time, like in some time you get used to it, so you don't feel like it's that hard, you know what I mean. So उसके बाद now I'll share कि ये jobs तो मैंने बता दी, इनको grab कैसे करना, like how to apply for these jobs and how to get the interview section and then just clear off the interviews and get the job, you know. तो now let's get started. So सबसे पहले कुछ websites के बारे में बता देता हूँ. तो आप यूनिवर्सिटी पोर्टल्स के ऊपर सबसे पहले अपना चेक कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आई स्टडी इन एस्टन यूनिवर्सिटी, आई एम स्टडिंग नर्सिंग हियर, सो बैचलर्स इन नर्सिंग. सो ऑब्वियसली इफ आई वांट गेट अ जॉब इन यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जाम्पल अप्लाई फॉर अ जॉब लाइक for the university library, or if I want to apply for something else related to university, so I will have to go for like university portals. Like there are different portals for like applying for part-time jobs.
So there is like I think one Aston for Aston University part-time jobs. They are not guaranteed, you know, like if you'll apply for it, if you'll ask for the jobs, they will definitely give you the, like there's no chance, like there's no guarantee, like there's no 100% chance, but it's still one of the options, you know, like if you have nothing, at least something is better than nothing. So after that, the other website is Student Job. So you can apply student job as well, on student job as well. So student job is really nice because they apply you they supply you with these jobs, you know, that are under like 20 hours as well. So if you are working here on a restriction, you can go for 20 hours. उसके बाद इंडीड के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो. इंडीड के बाद लिंक्डइन के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो. लिंक्डइन के अंदर क्या सीन है कि इट इज़ मोस्टली फॉर दोज हु हैव ग्रेजुएटेड एंड देन दे जस्ट वांट टू अप्लाई फॉर अ फुल टाइम जॉब. बट let me aware you guys. So basically LinkedIn is not just for full-time jobs. It is also, it could be useful for like part-time jobs as well. So if you are gonna apply on Indeed, so just copy paste the CV and then copy paste it on our LinkedIn, and you can apply there as well. So you never know when you'll get the chance to grab a job opportunity from which site, you know, like you never know. So उसके बाद अगर आपको CV के बारे में जानना है, ज़्यादा आपकी CV इसमें ओवरवेलमिंग नहीं होनी चाहिए कि उसमें आपने सब कुछ डाल रखा है कि आपकी इतनी क्वालिफिकेशन. ऑब्वियसली इफ़ यू आर जस्ट गोना क्लीन द डिशेस, it wouldn't matter if you have a degree or in masters or if you are graduated or anything like that. Like the only thing that matters is your like prior experience, and that too like something, at least something related to what you have applied for. So that's the only thing. So don't like exaggerate your wording, or don't exaggerate your words in such a term that, you know, would overwhelm the reader, and they might just skip your profile, you know. So don't do that. So just make sure your CV is to the point for the job, and also make sure that your CV is related to the job that you're applying for. So make sure that it focuses on that job, on that particular job. So make like 5 to 6 CVs of different work experiences. So yeah, that's how it's gonna work. Obviously, like when I started working here in the UK, it took me a while to get the jobs, you know, like it's been like 9 months of me in the UK, or 9 महीनों में. इफ़ आई टेल यू ऑनेस्टली, स्टार्टिंग के 5-6 महीने बहुत ही बुरे गए थे, और 5-6 महीने में मुझे कोई जॉब नहीं मिली थी, नथिंग. आई डिड गेट द जॉब ऑफर्स फ्रॉम सम ऑफ द रेस्टोरेंट्स, बट दे weren't paying me like proper wages, and they were paying me around like 5-6 pounds. Like they were telling me to work like not like more than 20 hours, like not on national insurance. They were like, we are gonna give you money, cash in hand, you know, so we're gonna pay you cash in hand. But I didn't do that. So obviously, because I don't want to take the risk, I will work under national insurance and under the minimum wage. But I know most of the students, like mostly, they prefer to go for cash in hand because they can obviously make more money in that thingy. But I won't promote it at all. It's really risky, so you shouldn't go for it. एंड ऑब्वियसली जब स्टार्टिंग में मैंने 20 आवर्स में मैं काम करता था अंडर नेशनल इंश्योरेंस, इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी बिकॉज नेक्स्ट डे यूनी होती थी, एंड नर्सिंग इज़ नॉट ईजी. तो ऑब्वियसली लाइक प्लेसमेंट्स एंड एवरीथिंग, इट वॉज अ हार्ड टाइम. बट अब मुझे जॉब ऑफर मिल चुका है बैंक HCA का, हेल्थ केयर असिस्टेंट का. सो आई एम गोना ग्रैब इट. आई हैव ग्रैब्ड इट, बट इट्स जस्ट द what do you call it? It's the police clearance, like DBS tech, that's left, and I think May first week, or most probably like second week, hopefully मुझे मिल जाए. And मेरा shift pattern रह गया and everything, like I got the job and everything, and the pay is really nice, and they give you like enhanced pay rates for like certain hours. Like if you're working on bank holidays, they're gonna pay you more, like an enhanced pay. If you're working nights, they're gonna pay you more. If you're working weekends, they're gonna pay you more. If you're working normal weekday nights, they're gonna pay you more. And if you're working on like normal weekdays, no holidays, nothing, then they're gonna pay you the proper like minimum wage. So it's really nice.
So yeah, so if you're in the UK and like trying to hustle like me, so just drop a yes in the comment section below. Like just let me know how your struggles have been, in the UK. So I'll see you guys in the next one. Till then, bye bye. Take care. Thank you so much for watching this one. Thank you guys for supporting me and um, for making me reach those 1K subscribers. So thank you so much. I'll see you guys in the next one. Till then, bye bye. Take care. Thank you so much for watching.